Thank you, Akanksha. Our Dean Faculty of Science, Professor Sheila Mishra, our Dean Student Welfare, Professor V.K. Sharma, our very learned head of departments from different departments of Faculty of Science, my colleagues from university holding different administrative positions, my fellow colleagues from the university, and very, very dear student friends. Now, see, my coming here and addressing a different crowd for the same purpose poses enormous challenge. But this is my 5th consecutive such interaction with students. Now, every time you're going to speak something new, so you think of कि भाई ये तो पहले ये बात तो बोल चुके, फिर ये बात भी बोल चुके, फिर ये बात भी बोल चुके. So, but then as a teacher, we have so many things to share. Then comes the problem of time, and especially today, attending n number of issues itself becomes poses another set of challenge. But then, at the outset, I join Akanksha in welcoming you all to University of Lucknow and congratulate you for clearing such a tedious test and qualifying amidst all odds with a lot of competition and challenges. So I take this opportunity to formally welcome on behalf of University of Lucknow and also on my own behalf. You all, how many of you have already been student of Faculty of Science of University of Lucknow? Close to 30-35%. Among those, ab rakh dijiye haath niche. Among those who have not been student of University of Lucknow, but from some other campus university, how many of you are from there? Good. Why I am saying this is, it's not about boasting the strength of our university, it's only about sharing our strength. And why I say that students of University of Lucknow are very, very lucky is that you are being exposed for next 2 years, you are being exposed to one of the most advanced and contemporary content in your respective fields. Now, why is it important? Why is it important to have got exposure of the most advanced and contemporary content? Because that enhances your suitability at the new, in the new era. I'm deliberately refraining from use of certain words that are used as a taboo in academics, but for all practical purpose, those are the basic meanings and nuances. So, we are the first university in the country to have implemented National Education Policy 2020, and I must share that post implementation of National Education Policy 2020, there have been significant enhancement in terms of the success of the outcome of our student in different competitive examinations. You see, अभी हमारे statistics के head साहब हैं. 2 years back, All India first position Indian Statistical Services from University of Lucknow. Last year also, we have had a student in top 10 and consistently we have been having. In almost all the specialized exams conducted for that in your respective subject area,
we have consistently been producing students who have been establishing their mark across the country. And I'm not talking of state level examinations, I'm talking of all India examinations. That is another ratification of the strength of the core academics that this institution has. But essentially, you have to have a clarity of which path you want to trade. So, did you take admission to your master's program because you did not get admission elsewhere? Is it? अच्छा MBA ट्राई किया, नहीं मिला तो MSc कर ली, ऐसा तो नहीं? इंटीग्रेटेड MTech प्रोग्राम ट्राई किया, नहीं हुआ तो MSc कर ली. Not like that. It is a choice. It is a preference. I hope it is a preference, because it is this preference that will lead to performance. Like, I want you to first focus on the faith of your teachers, because you have some very accomplished faculty here. And I'm not reiterating the fact that this institution had some legendary in their respective fields, like Dr. Birbal Sahani and the likes. But even many of the contemporary faculty members that you will be exposed to in your classrooms, in your lab and otherwise, they have had their respective contributions at par with some leading international faculty and institutions. Probably their content might be part of your curriculum. Their creations you might be studying. Their research contributions you might be studying. Their books you might be studying. So, it is an amazing feeling to be studying directly from a teacher whose book and whose research works you have been exposed to probably in your graduation, or you are now getting exposed into your post-graduation. So have faith in your teacher. They have certainly something to contribute to the good of your career. But when you talk of career, it is important to have two important things. One, whether this is your preferred choice of profession. Do you actually wanted to pursue your post-graduation in the respective discipline that you wanted to? How many of you have actually opted for a discipline that you wanted? 1, 2, 3, 4. Okay, ये आगे के bench में you guys are just like, हाँ? जहाँ मिल गया ले लिया. ऐसे होते हैं? नहीं? क्यों? You did not raise your hand. That's why I'm asking. ऐसे लोगों को भी, to bring them into the system, it is important. शादी के बाद प्यार कर लो. नहीं होता है. हमारे तो ज्यादातर वही होता है. हाँ, हमारे ज़माने में. So now that you have taken admission to the program, now start loving your subject. This would have been an automatic love had it been a choice of your preference. Otherwise, हाजी मोहब्बत करेंगे. अब now that I've taken maybe statistics, mathematics, computer science, you know, zoology, botany, biochemistry, whatever. अभी biochemistry में नहीं हुआ तो botany में ले लिया. बायोटेक्नोलॉजी दे रहे थे, नहीं मिला, बायोकेमिस्ट्री ले लिया. बायोकेमिस्ट्री नहीं मिली तो केमिस्ट्री ले ली. तो भी शादी के बाद भी प्यार होता है, लेकिन अब भी प्यार किया तो उसको निभाना है. दैट इज ऑल दैट आई एम सेइंग. अभी उसको निभाना है आपको. कैसे? बिकॉज योर करियर इज डिपेंडेंट ऑन 2 C's. One is your commitment, other is your competence. Commitment forms part of your contributions.
your efforts are to be brought into informing commitment. Our intent is to develop competence in you. Competence has three components. One, knowledge, क्लास में पढ़ाएंगे. One, skill, आपको लैब में सिखाएंगे. They'll take you to different professional labs. CSIR के बहुत labs हैं here. They'll take you to so many this thing. Third is motive. Now what is this motive? क्यों करना है? Now here comes the first question that I said, whether this has been your discipline of preference. नहीं तो फिर दिल बायोकेमिस्ट्री में रह गया, अपने केमिस्ट्री में पड़ गए. So वो एक you'll have to see whether it is forming part of the larger goal that I've set for myself, my subject, my career. Now, it is important, as a student, it is extremely important for you to be comprehensive, especially at the stage of postgraduate. Master's program, I'm saying, you know, एक बड़ा challenge आपको interesting बताते हैं. एक बार एक यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के आप जैसे मास्टर स्टूडेंट्स आफ्टर एग्जामिनेशन वो पेपर मिला, दे वेंट इन विथ ऑल दीज नारा वारा एंड सो ऑन. तो पूछा कि भाई उनका एग्जाम हो रहा था, उसके बाद बाहर निकले तो एचओडी ने पूछा भैया क्या दिक्कत है? बोले साहब ये सिलेबस के बाहर का पूछ दिया. समझदार एचओडी था, हमारे यहाँ के हेड्स की तरह. उसने कहा भाई तुम सब्जेक्ट के मास्टर होने जा रहे हो, अभी भी कह रहे हो कि ये बाहर का है. भाई यू आर क्लेमिंग टू बी मास्टर ऑफ जूलॉजी, मास्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मास्टर ऑफ बायोकेमिस्ट्री, और अभी भी कह रहे हो सिलेबस के बाहर का, और क्लेम करोगे कि आई एम मास्टर ऑफ दिस सब्जेक्ट. So you have to be as comprehensive as possible. And what is important? Like for example, I give you a question. बारिश क्यों होती है? होती है बारिश. हम लोग छोटे थे, क्लास में पढ़ते थे. वाटर वेपोराइज होता है, फिर वो वेपर बनता है, फिर वो क्लाउड में कन्वर्ट होता है, फिर क्लाउड का कुछ कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, फिर रेनफॉल करता है. दिस आंसर्स हाउ. मेनी ऑफ द क्वेश्चंस that we encounter around ourselves, they attempt to find how. ये कैसे हुआ? अभी ये आपने देखा, ये झूमर देखिए इसको, येलो. अभी हम गीतांजलि मैडम को बोलेंगे, वो एक आध स्विच दबाएंगे, ये वाइट हो जाएगा. मैडम दबाइए कुछ, देखिए देखिए आप लोग इसको. सो ये वाइट हो जाएगा. एज अ क्यूरियस स्टूडेंट यू शुड नो कि भाई ये कैसे हो जा रहा है. क्या मैडम आप, ये मैडम जूलॉजी की हैं तो नहीं हो रहा है इनसे. इट नीड्स अ फिजिक्स प्रोफेसर. उसमें स्विचेस होते हैं, वो आप एक दो बार वो अपने आप कलर्स चेंज होते हैं. अभी वैसे करके दिखाएंगे अब ये जरूर. So, as a curious student, you would certainly want to know कि ये कैसे हो रहा है. मुझे भी लगता है ये स्विच बार बार दबाने से कलर कैसे बदल जाएगा. But question is not how, because how के आंसर देखिए, वो white हो गया बीच में एक, अभी फिर येलो हो गया. देखिए how, वही अब फ्यूज नहीं करना है. तो अभी you know we try to find these answers, and since very young classes we have been made inquisitive, and we appreciate such curiosity of our student as to ये पूछ रहा है कैसे हुआ. Many of our questions
that we face around us, where we pose a question of how, are answered रिलीजन के हिसाब से भी, अलग अलग बिलीफ और फेथ के हिसाब से भी जवाब मिलते हैं, और साइंस के हिसाब से भी मिलते हैं. किसी ने कहा गाय माता है. कल हम लोग मेडल के लिए वी वर इंटरव्यूइंग सम कैंडिडेट, तो उसमें सोशल सर्विस का भी आता है. बच्चे अपने तैयार करके आते हैं. किसी एक ने कहा साहब हम गो रक्षा के लिए या गो सेवा के लिए हम काम करते हैं, हम उनको जाके कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं क्योंकि गाय हमारी माता है. तो हमने कहा आपको कैसे पता, किसने बताया? वन आंसर कम्स फ्रॉम रिलीजन, वन आंसर कम्स फ्रॉम साइंस. दोनों है, आप जाके पढ़ना, आपको दोनों आंसर मिलेंगे. बट वी एज अ स्टूडेंट, स्पेशली एट अ मास्टर्स लेवल, वी हैव गॉट टू मूव बियॉन्ड दिस हाउ टू व्हाई. क्यों? व्हाई? भाई वाटर वेपराइज हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ पता है, वो एक प्रोसेस है. प्रोसेसेस आर नॉर्मली एनलिस्टेड. कोई प्रोसेस करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, एनलिस्टिंग होती है, ऐसे ऐसे करना है, गड़बड़ करोगे नंबर काट देंगे. वी हैव गॉट द आंसर ऑफ हाउस, वी हैव गॉट टू ट्राई एंड फाइंड आंसर्स ऑफ व्हाई. अल्टीमेट व्हाई का आंसर जब मिलेगा, वही आपको मास्टर बनाएगा सब्जेक्ट का. क्वेश्चन के आंसर्स नहीं बनाएंगे. 10 क्वेश्चन पढ़ के गए, 5 आए, उसमें कहा ये सिलेबस के बाहर है, हम नहीं देंगे परीक्षा, मत दो. फिर तो हम भी तुमको मास्टर नहीं बनाएंगे. तुम नहीं दोगे तो हम मास्टर नहीं बनाएंगे. बिकॉज हम मार्कशीट दे सकते हैं, डिग्री दे सकते हैं, मास्टर कैसे बना सकते हैं सब्जेक्ट का? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? We say, who are the masters? Masters, who are the masters? Who knows the answer of how and why both. So that any questions that comes, I should have the ability to either have the answer or know the path of obtaining the answer. So at master's level especially, I would want you to be as comprehensive as possible. Then you also have to be attentive, isn't it? You have to be attentive. Not just with the specific A to Z content that you are being provided with, but to the ecosystem within which you operate. And this is a program that is called Diksharam, and there is a preparation of another program that is said to be Dikshant. This your journey from Diksharam to Dikshant is where our role as an institution comes in, role of all your teachers comes in, but it is not just my role or the role of your teachers, it is the role, largely the role of yours, to be receptive, to be attentive towards your ecosystem, because that is what is going to make you sensitive to. So from attentivity, you have to move to receptivity. There is a lot of challenge as a teacher for us in a class. I say 40 घंटे की एक सेमेस्टर हुआ, 39 क्लास हमने सही सही बोला, और एक क्लास में हमने एक चीज़ गलत बोली, लड़का उसी को पकड़ लिया, कहे गुरुजी को ये भी नहीं आता. मार्क ट्वेन ने एक बड़ा स्पीच दिया, बढ़िया. उस स्पीच में उसने अपने दोस्त को बुलाया था, देखो मैं कितना बढ़िया स्पीच देता हूँ. और उस स्पीच के बाद उसने कहा कि दोस्त को बोले कैसा बोला मैं? उसने कहा आई हैव गॉट अ बुक वेयर एवरी सिंगल वर्ड दैट यू स्पोक वाज फ्रॉम द बुक. और उसको बड़ा ईगो भी लगा और ऐसे भी लगा कि नो एवरी सिंगल कंटेंट हैज बीन माइन. कहा ठीक है, शर्त लग गई 1,000 पाउंड की. बोले टुमारो आई विल गिव यू अ बुक वेयर एवरी सिंगल वर्ड दैट यू स्पोक वाज फ्रॉम द बुक. अगले दिन वो अपने दोस्त को ले आके डिक्शनरी दे दिया.
everywhere. So factually he might not have been wrong, but he was not receptive enough. Receptive enough to appreciate the strength of the person. And last but not the least is your sensitivity. At the end of the day, all this career, education, academics, accomplishments, all are for what? To make us a good human being. For, like, एक गुलाब है, अभी वो एक गुलाब दिया मैडम ने. अब this gulab can be interpreted by different discipline people in different ways. अभी कोई हिंदी लिटरेचर का नहीं है, नहीं वो उसके लिए वो शायरी और एक किताब का सबब हो सकता है. कोई केमिस्ट और सीमा आप उसमें उसको दे दें गुलाब, तो आप क्या एनालिसिस करेंगे? शी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि इसके कॉम्पोजिशंस क्या हैं, इसमें मैग्नीशियम कितना है, इसमें क्या क्या है. हम तो नॉट सो मच अवेयर. और बॉटनी वाले प्रदीप बैठे, Pradeep will interpret it, the botanical aspect of that, the same gulab, और वो biochemistry तो कुछ और ही करेगा. We need to be sensitive enough to our ecosystem, to our institution, and that is why I say, last but not the least, is you have to have an empathetic relationship with your institution. That is the only solution for a sustainable career of yours and the growth of your institution. I hope I've been able to convey and put across the message that I wanted to all the students, master's students of Faculty of Science. I wish you all the best in your career. Feel free to interact with every single individual that is there in the institution, be it a peon of your department, up to the Vice Chancellor. You can come up with your suggestions. There are a lot of social media where every single individual is available. All your head of departments are made to sit in their offices only for you from 4 to 5. So any issue, let it be personal. मान लो मेरे को फीस जमा करने में दिक्कत हो रही, मेरे थोड़े फाइनेंशियल इश्यूज आ सकते हैं, मुझे क्लास का कोई स्टूडेंट है जिससे जो परेशानी हो रही है, मुझे सब्जेक्ट का कोई प्रॉब्लम है, मुझे करियर का कोई प्रॉब्लम है. लॉट ऑफ मेंटरिंग स्कीम्स आर ऑल्सो देयर. ट्राई टू टेक द मैक्सिमम आउट ऑफ इट. We'll keep sharing the information through the university mobile app, through the university website. We are available, the university is available across all social media platforms, through which you can gain access to all the happenings. So अभी आप जो हम लोग ये संवाद कर रहे हैं, थोड़ी देर में आपको ये यूनिवर्सिटी के अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, वेर आपकी शक्लें भी दिखेंगी, और जो नहीं होंगे उनकी शक्लें काट के हम लोग आपके घरों में भेजेंगे भी. So all the very best. Enjoy your 2-year stay. Take the maximum of your stay and make you proud, your family proud, your institution proud. Thank you very much.